वेलकम टू मोराल टीचिंग पीएनसी स्टूडेंट्स आज आम MDC जहाँ हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तार किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन डिस्कसन करवा इंपोर्टाट 1 मार्क टाइप क्वेश्चन जहाँ कि पार्ट 1 रे आसी क्वेश्चन रे पार्ट 1 रे आसी 100 मार्क जो क्वेश्चन रोची तारोटी पार्ट रोची पार्ट 1 रे तुम 1 मार्क टाइप क्वेश्चन आसी जहाँ हूँ फिल इन द ब्लैंक्स बा आंसर इन 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन से विषय में डिस्कसन करवा तुम पिले एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सिलेबस देखा 4टी यूनिट अच्छी यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 एंड यूनिट 4 यूनिट 1 हूँ एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल यूनिट 2 हूँ सॉइल केमिस्ट्री एंड एयर पॉल्यूशन यूनिट 3 हूँ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट 4 हूँ एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस आम प्रति यूनिट रु कौन कौन इंपोर्टाट 1 मार्क टाइप क्वेश्चन आसीपार संभावना अच्छी सेगुड़िक डिस्कसन करवा आंसर कहवा तार प्रति 1 मार्क प्रश्न और उत्तर कहबी तो आसतु आरंभ करवा आज भिडियोटी प्रथम जा आंसर इन 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन को यूनिट 1 जहाँ एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल से यूनिट रु ये क्वेश्चन आसीपे व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर आंसर हूँ नाइट्रोजेन एटमॉस्फेयर वायुमंडल सब अधिका परिमाण क्यों गैस थाए नाइट्रोजेन देन व्हिच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस सबुज गृह प्रभाव क्यों गैस दायी मुख्यतः आंसर हूँ कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर सर्कुलेशन इन नेचर कॉल्ड वाटर साइकिल जो हो वाटर सर्कुलेशन जो नेचर हो साइकिल वाटर साइकिल आम कौन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नेक्स्ट व्हिच बायोजियोकेमिकल साइकिल इन्वॉल्व्स नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों साइकिल नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छी आंसर हूँ नाइट्रोजन साइकिल आमर कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल सल्फर साइकिल और फॉस्फर साइकिल अच्छी 5टा साइकिल आमर अच्छी बायोजियोकेमिकल साइकिल जमी गोटे 2टा एग्जाम आसो देन व्हाट इज द मेजर सल्फर कंटेनिंग पॉल्यूटेंट इन द एयर सल्फर रही गोटे मुख्य पॉल्यूटेंट प्रदूषक किए एयर वायुमंडल आंसर हूँ सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच एलिमेंट इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मानकर बैकबोन मुख्य किए को एलिमेंट आंसर हूँ कार्बन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मैटर को भांगिकी छोट छोट कंपाउंड में परिणत करने को कौन कहुए आंसर हूँ डिकम्पोजिशन बा विघटन व्हाट इज द मेजर फॉस्फोरस रिजर्वर ऑन अर्थ फॉस्फोरस रिजर्वर ऑन अर्थ क्यों रूप में क्योंठी फॉस्फोरस थाए अधिक परिमाण आंसर हूँ रॉक्स बा पत्थर खनिज पत्थर रॉक्स व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन ओजोन रो केमिकल फॉर्मूला कौन O3 व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रिएंट एक्युमुलेशन इन वाटर बॉडीज ताले जो प्रोसेस रे एक्सेसिव न्यूट्रिएंट वाटर बॉडी माने रही जाए तो कौन कह से प्रोसेस को कह जाए यूट्रोफिकेशन व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन श्वास प्रश्वास श्वासक्रिया क्यों गैस ऑक्सीजन व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल स्पिल व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑयल स्पिल्स आंसर हूँ पेट्रोलियम ऑयल स्पिल रो मुख्य कारण कौन पेट्रोलियम व्हिच एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्नेस वाटर वाटर हार्नेस मुख्यतः क्यों एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल 2टा कैल्शियम और मैग्नीशियम मुख्यतः हम कैल्शियम मैग्नीशियम लिखले भी चलो व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वाटर पीएच वाटर पीएच मापियार कॉमन यूनिट कौन आंसर हूँ पीएच स्केल व्हाट इज द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर ताले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम माने जो ऑक्सीजन को रिक्वायर करती कौन को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जिन्होंने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD ये थिला यूनिट 1 नो किछा आंसर इन 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन आमे आंसर इन 1 वर्ड पर किछि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन में डिस्कशन करबा एबे जानत जिबा यूनिट 2 जहाँ हूँ सॉइल केमिस्ट्री एंड एयर पोल्यूशन व्हाट इज द प्राइमरी पॉल्यूटेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन क्यों मुख्य पॉल्यूटेंट किए आंसर हूँ सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच टाइप ऑफ स्मोक इज फॉर्म्ड ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शंस आंसर हूँ फोटोकेमिकल स्मोक व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर इन द एटमॉस्फेयर वेयर ओजोन इज फाउंड ओजोन क्यों लेयर देखा जाए आंसर हूँ स्ट्रेटोस्फियर व्हिच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन ओजोन लेयर डिप्लेशन क्यों गैस मुख्यतः दायी आंसर हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC व्हाट इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटी क्यों मेजर
ग्रीन हाउस गैस निर्गत हुए आंसर होची कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल जो प्रोसेस रे उद्भिद माने सॉइल रु नाइट्रोजन नियंती तो आंसर होची एसिमिलेशन व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन प्राइमरी सोर्स कौन एग्रीकल्चर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC रो फुल फॉर्म होची क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्हाट इज द मोस्ट टॉक्सिक हेवी मेटल फाउंड इन इंडस्ट्रियल वेस्ट आंसर होची मर्क्यूरी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल लॉस ड्यू टू वाइन और वाटर कॉल्ड दैट इज इरोजन व्हाट इज द मेजर पोल्यूटेंट एमिटेड फ्रॉम व्हीकल एक्सॉस्ट आंसर होची कार्बन मोनोक्साइड व्हिच एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट कॉजेस रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा आंसर होची PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM means particulate matter what is the color of nitrogen dioxide ro color ki padi brown what is the term for substances that destroy the ozone layer answer hoji ozone depleters tale जेउ सब्सटेंस माने ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करछन तांको ना होची तांको गोटे टर्म दिया जाई छि ओजोन डिप्लेटर्स व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया रे कन्वर्टन प्रोसेस को कोन कुआ जाय ता होची नाइट्रोजन फिक्सेशन इतला यूनिट 2 रु एबे जे यूनिट 3 रु किछि इंपोर्टेंट आंसर इन वन वर्ड टाइप क्वेश्चन जा होची इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आंसर इज लैंड फिलिंग व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री पोल्यूशन आंसर इज डस्ट व्हिच गैस इज कॉमनली एमिटेड फ्रॉम कोल बर्निंग इंडस्ट्री रु क्यों गैस मुख्यतः निर्गत हुए आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सुगर इंडस्ट्रीज रिच इन आंसर इज मोलासेस व्हाट इज द टॉक्सिक एलिमेंट कॉमनली फाउंड इन वेस्ट आंसर इज lead व्हाट इज द मेन पोल्यूटेंट फ्रॉम पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज आंसर इज lignin which metal is used in catalytic converters to reduce emissions आंसर इज platinum तो catalytic converter जो मेटल यूज करा जाए ता होची platinum what is the radioactive gas emitted from uranium decay answer is radon what is the process of treating wastewater to remove contaminants answer is purification what is the first stage of solid waste management answer is segregation what is the process of converting waste materials into new products answer is recycling waste material हम किछि नुवा जो तयार करिया ताको recycling कहबा what is the most common pollutant in nuclear power plants answer is radiation most common pollutant is radiation what is the term of for waste that can be broken down naturally answer is biodegradable waste what is the process of using bacteria to clean oil spills answer is bioremediation what is the common method used to remove heavy metals from wastewater answer is precipitation what is the process of reducing the volume of waste by burning answer is incineration what is the main component of smoke in urban areas ozone answer is ozone what is the major cause of air pollution in metropolitan cities answer is vehicular emissions what is the term for waste generated by hospitals and laboratories answer is biomedical waste what is the primary method of controlling air pollution from industries answer is scrubbing ये थिला किछटा इंपोर्टेंट आंसर इन वन वर्ड टाइप क्वेश्चन हमें एबे जिबा फिल इन द ब्लैंक टाइम क्वेश्चन एभली क्वेश्चन आसीबो तो एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डैश आंसर इज नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर मुख्यतः के थाय को गैस थाय नाइट्रोजन the heat budget of the earth atmosphere system is maintained by the balance between dash and dash answer of incoming solar radiation and outgoing terrestrial radiation the vertical stability of the atmosphere is determined by dash answer is temperature gradients the primary gases involved in the carbon cycle are dash and dash carbon cycle le मुख्यतः केउ gas थाय involved primarily answer होची carbon dioxide and methane the nitrogen cycle involves processes such as nitrogen fixation gas and dash तले nitrogen cycle जे जो process मुख्यतः थाय ता होची nitrogen fixation nitrification denitrification the movement of phosphorus in the environment is primarily through dash तले जो phosphorus movement होची environmental cycle primarily through dash answer होची weathering of rocks sulfur enters the atmosphere primarily in the form of dash sulfur atmosphere entry करे in the form of sulfur dioxide oxygen is essential for dash reactions in living organisms oxygen is essential for respiration by respiratory reaction
The chemical composition of freshwater bodies includes dash and dash as major ions. The chemical composition of freshwater bodies includes calcium 2 plus ion and bicarbonate ion as major ions. The hydrological cycle involves processes like dash and dash. Hydrological cycle में जो process था ताहा होची evaporation and precipitation. Aquatic pollution can be categorized as dash and dash pollution. Answer of organic and inorganic pollution. The presence of dash in water bodies leads to eutrophication. The presence of phosphates. The parameter used to measure the oxygen required for microbial decomposition of organic matter is called biochemical oxygen demand, BOD, biochemical oxygen demand. The standard method to determine dissolved oxygen in water is dot dash Winkler's method. जो मेथड रे डिजल ऑक्सीजन को मपा जाए ताको विंकलर्स मेथड कहा जाए. The major pollutants in industrial wastewater includes dash and dash. The major pollutant in industrial wastewater होची heavy metals and organic compounds. Oil spills primarily affect the dash environment. Oil spills primarily affect the marine environment. The permissible limit of arsenic in drinking water is dash milligram per liter. Answer होची 0.01 milligram per liter. The method used to remove chlorine demand in water is dash. Answer is chlorination. The analytical method to measure chemical oxygen demand in by COD involves dash. Potassium dichromate oxidation. Water purification techniques include dash. Water purification technique रे कौन कौन जाउची filtration and disinfection. Then soil consists of dash and dash nutrients. Soil consists of micronutrients and macronutrients. Excessive use of fertilizers leads to dash. Excessive use of fertilizer leads to soil pollution. The major sources of soil contamination include dash and dash. The soil contamination major source किए pesticides and heavy metals. The chemical composition of the atmosphere includes particles, dash and dash. The chemical composition of the atmosphere includes particles, ions and radicals. The formation of smoke is due to dash reactions in the atmosphere. Answer is photochemical reactions in the atmosphere. Acid rain is caused by the dissolution of dash and dash oxides in water. Acid rain कौन पे होता है? Sulfur and nitrogen oxide. One of the major greenhouse gases responsible for climate change is dash. ताले मुख्य सबुजोगुर गैस की जे की climate change पे दायी से होची carbon dioxide. The main source of nitrogen oxide in the atmosphere is vehicular emission. The main source of nitrogen oxide in the atmosphere होची vehicular emission. जो जानवाहन जो गैस निर्गत होची. Chlorofluorocarbons are responsible for the depletion of dash layer. Answer is ozone layer. The greenhouse effect leads to dash global warming. Air pollutants can be monitored using dash instrument. Answer is continuous monitoring instruments. The most common method to measure particulate matter in air is dash. Answer is gravimetric method. The presence of dash in the air leads to respiratory disease. The presence of sulfur dioxide. The main component of industrial smoke is dash. Answer होची sulfur dioxide. Industrial smoke रो मुख्य component होची sulfur dioxide. Dash is used as a catalytic converter in automobiles to reduce pollution. तर कहा को catalytic converter भाବରେ व्यवहार करू. Answer होची platinum. Ozone formation in the troposphere occurs due to reactions involving dash and dash. Ozone formation occurs due to reactions involving nitrogen oxides and volatile organic compounds. By oxides of nitrogen and volatile organic compounds. The most common photochemical pollutant formed in the atmosphere is answer is ozone. The reaction of sulfur dioxide with water forms dash sulfuric acid. The primary pollutant responsible for acid rain is sulfur dioxide. The standard method for measuring nitrogen oxide in the atmosphere is the dash method, Grease-Salzman method. The major source of cement industry pollution is dash. Answer is particulate matter. Sugar industry waste primarily contains high levels of dash. Answer is organic matter. Sugar industry मुख्य होजी हमें देखिए waste हिसाब रे organic matter. The distillery industry generates waste rich in dash. Answer is molasses. Paper and pulp industry solution is due to the presence of lignin. The main concern in nuclear power plant waste is radioactive isotopes. The process of reducing industrial waste by reusing material is called recycling. Radionuclide analysis is essential for monitoring dash pollution, nuclear pollution.
The primary method for the disposal of solid waste is dash landfilling. Heavy metals from industrial pollution are toxic because they dash in living organisms. They bioaccumulate. They accumulate in living organisms. Heavy metals easily accumulate in living organisms. A key principle of waste management is the dash principle. The key principle in the waste management is 3R, that is reduce, reuse and recycle principle. तो ये थिला किछा इंपोर्टेंट 1 मार्क टाइप क्वेश्चन दा होची फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन एंड आंसर इन 1 मार्क टाइप क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो पेपर होची एमडीसी बा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स.